my first attempt. In prelims, I scored 150 out of 200, but in mains, I fell short of 2 marks. 787 was the cutoff, 785 was my score, and I could not get an interview call. At such moments, you feel sad. Everybody feels sad. But you see, at such moments, you need to have a self-affirmation that you have failed this time because you have to win substantially next time. And certain poems in myself, मैंने देखा कि कहाँ कमी रह गई और कहाँ सुधार कर सकता हूँ. So I identified my lacunas and worked upon them more vigorously, with more desire. The desire was already there. I had taken a firm decision to continue it, and I endured this decision with a firm passion in my mind throughout the journey, and with more micro and macro planning, with immense amount of discipline, you can definitely execute your desire, because discipline bears consistency, and consistency will make you persist. And as Napoleon Hill in one of his books says, failure can never cope up with persistence. If you persist enough in first attempt, second attempt, third or fourth, AIR 5, Duru Shetty Anudeep has scored rank 1 in his 5th attempt. It is a story of persistence. So I persisted enough, and what I did, I limited my resources and maximum optimization out of those resources. Did a lot of answer writing practice. And with God's blessings, with the belief that people repose in you, with the belief and zeal and zest with which your teachers teach you, AIR 68 is even possible. So not wasting much of the time, I would talk now relevant stuff. I would talk what is, I will, जब video upload हो जाएगा, then write these sources, whatever I will tell you, कौन सा source पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़नी है, क्या strategy होनी चाहिए, but right now just listen, okay? I'll make it very condensed, and this is the book list which you need to follow. This is the one-stop solution for all the ills and all the ocean of information and misinformation that goes around in the market. So I'll tell this condensed sources, बाद में लिख लेना, खरीद लेना और घर पे रख लेना. This is all you need to do in this 1 year. Nothing more than this. अगर ज़्यादा spread out किया तो नहीं होगा. इतना ही किया तो होगा. Okay, so I'll start with this. You see, a passenger, I'll start with an anecdote. What is the most important thing to download, print out and read first in this entire journey? I'll start with an anecdote. A passenger who travels in a train, who boards a train without a ticket in his hand, has a feeling that he's going somewhere, but he's going nowhere because there is no destination. That ticket is your syllabus and your past year papers, 2013 onwards. मैं prelims की बता रहा हूँ बात. Mains की भी obviously, but अभी prelims की बात करते हैं. That syllabus is your ticket. You need to have that ticket in your hand to have a clear-cut idea of the destination in mind. So the first thing which you will do is to download syllabus, print it out, and read everything, every topic, poverty and hunger, SHG, pressure group, NGOs, everything you'll read. ताकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ो या कोई भी सोर्स पढ़ो तो आपको पता चले कि यही करना है. न्यूज़ सिलेबस में ये है, आप अस्ट्रे नहीं होंगे. यू विल नॉट अस्ट्रे फ्रॉम व्हाट इज टू बी डन, व्हाट ऑट टू बी डन. तो सिलेबस सबसे पहला काम करना, डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना, और 2013 ऑनवर्ड से पास्ट ईयर पेपर जो हैं उनको देख लेना एक बार. हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड, व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड. ओके, द फर्स्ट थिंग व्हिच यू विल डू इज दिस. आफ्टर दैट, इससे आपको आइडिया चलेगा मुझे पढ़ना क्या है, what I have to read and what I have to ignore. Okay? Work meticulously on your syllabus and past year papers. Re-emphasize करूंगा पूरी जर्नी में, पूरी इस lecture में certain things which you should keep in mind. Now for prelims, the first subject comes polity. Don't read. So see, I have learned failure once. I have given the second attempt. I can better guide you what not to do rather than what to do. So the first thing in polity, don't read D.D. Basu, don't read Subhash Kashyap, don't read anything. Lakshmikant is the Bible. Okay? और अगर लक्ष्मीकांत शुरू में समझ नहीं आ रही है, ज्यादा से ज्यादा 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, पहले वो पढ़ लो. मैंने भी पहले वही पढ़ी थी. आफ्टर दैट यू हैव टू टेक लक्ष्मीकांत एज योर बाइबल. रीड इट ट्वाइस थ्राइस, वट एवर टाइम्स इन दिस एंटायर जर्नी. दैट्स इट. नो डीडी बसु, नो सुभाष कश्यप, और नो अदर सोर्सेज फॉर पॉलिटी. एंड व्हेन यू रीड पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, ट्राई टू सी 2013 के बाद जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको मैं सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं. Is Hindi and English mixed okay with everyone? Okay. Second subject, geography. I have never read beyond 11th and 12th NCERTs. I have not read G.C. Leong. I have not read Sabinder Singh.
I have only read 4 NCERTs of 11th and 12th standard. Because your teacher here will clear your concepts. Monsoon क्या होता है? Yes, you need a guide on certain topics like monsoons. How do they occur? Onset of monsoon, break of monsoon, retreat of monsoon, ocean currents. You need to have a better understanding of ocean currents, inversion of temperature, etc. So उसके लिए teacher is enough. You don't need to spread out your sources. After your teacher teaches you, you just need to focus on 11th and 12th NCERT. That's it. Plus map, world atlas. जब भी आप NCERT पढ़ें तो मैप को साथ रखिएगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एक NCERT में एक फोटोग्राफ लिखा है, नीचे लोकटक लेक लिखा है, ओनली दिस. नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ग्रेजुएट और अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट टू एटलीस्ट सर्च ऑन इंटरनेट और गो ऑन मैप वेयर लोकटक लेक इज. साफ क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था, वेयर इज लोकटक लेक लोकेटेड? इज इट इन मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश और वॉट एवर? इज इट इज इन मणिपुर. ओके, सो NCERT से बाहर ज्यादा नहीं आता है, provided your concepts are made clear by the teacher. Okay, so geography 11th and 12th NCERTs plus map, world atlas. Third, history 11th and 12th की तमिलनाडु NCERTs. अगर तमिलनाडु NCERTs थोड़ी ड्राई लग रही हैं तो ओल्ड NCERTs, RS शर्मा, सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा NCERTs. अगर वो ड्राई लग रही है तो थीम्स 1 2 3 जो लेटेस्ट है. मगर एक सोर्स, टेक वन सोर्स, either of these three, preferably 11th and 12th तमिलनाडु NCERTs. ओके, नथिंग मोर देन दैट. इन तीनों सोर्स में कोई एक सोर्स चुन लीजिए और सिर्फ स्टिक टू दैट सोर्स. डोंट वरी कि क्वेश्चन क्या आ रहा है, स्टिक टू दीज सोर्सेज. ओके, प्लस स्पेक्ट्रम बुक, मॉडर्न इंडिया फॉर जनरल स्टडीज स्टूडेंट्स. हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए नेक्स्ट सेशन कभी और करेंगे, ठीक है? मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है इसलिए, मगर जनरल स्टडीज के लिए स्पेक्ट्रम बुक, ओनली दैट, मॉडर्न इंडिया फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. आर्ट एंड कल्चर, लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, लॉट ऑफ आर्ट एंड कल्चर के लिए ये 500 पेज की किताब पढ़िए. यू हैव टू हैव कि इनपुट टू आउटपुट रेशियो कितना आ रहा है. अगर आप 500 पेज की किताब पढ़ेंगे फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, फिर भी क्वेश्चन वो नहीं आता है, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी. सो यू हैव टू हैव अ लिमिटेड रिसोर्स फॉर आर्ट एंड कल्चर एंड दैट वुड बी इंट्रोडक्शन टू आर्ट क्लास 11 NCERT. दैट्स इट, मैंने इतना ही पढ़ा. और जो बाकी आर्ट एंड कल्चर होता है वो आप 11th एंड 12th की NCERT जब पढ़ेंगे, तमिलनाडु की NCERT, तो उसमें मुगल आर्ट भी होगा एक चैप्टर, पेंटिंग्स क्या थी वो होगी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था वो होगा, बल्बस डोम, गुंबद डोम एटसेट्रा. अबुल फैजल ने कौन सी किताब लिखी वो उसमें हो जाएगा क्लियर. आपको अपने सोर्सेस स्प्रेड आउट नहीं करने हैं, आपको इसी लिमिटेड सोर्स में से मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन करना है. आर्ट एंड कल्चर के लिए इंट्रोडक्शन टू आर्ट एंड कल्चर क्लास 11 NCERT, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट. और अगर टीचर इधर नोट्स में लिखवाते हैं कुछ कि क्लासिकल डांस फॉर्म या वो या फोक आर्ट्स या पेंटिंग, वो ठीक है, बट आर्ट एंड कल्चर के लिए स्पेसिफिकली एक किताब मत खरीदिए 500 पेज की या 600 पेज की, आउटपुट रेशियो नहीं आएगा उतना. यू हैव टू रीड इंट्रोडक्शन टू आर्ट क्लास 11 NCERT. फोर्थ, एनवायरमेंट, शंकर IAS बुक, टॉप टू बॉटम, दैट शुड बी द बाइबल. बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंट इकोलॉजी हो जाएगी. 2013 के बाद इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का पेपर कंबाइंड हो चुका है, इसलिए एनवायरमेंट और इकोलॉजी की वेटेज बढ़ चुकी है, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए टॉपिक्स की. फिफ्थ, इकोनॉमिक्स, संजीव वर्मा की किताब, 250 पेज की किताब है, कोई रमेश सिंह नहीं पढ़ेगा, सिर्फ संजीव वर्मा की किताब पढ़ेगा प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए. इकोनॉमिक्स सर्वे 1 and 2 अब शायद कंबाइंड हो चुकी है या अब फिर से 1 and 2 आ चुका है, जो भी है. इकोनॉमिक्स सर्वे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मगर इकोनॉमिक्स सर्वे में डोंट स्पेंड टू मच ऑफ टाइम ऑन रीडिंग लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ग्राफ्स, फिगर्स. जस्ट गेट टू नो द क्रक्स ऑफ द चैप्टर. इनफैक्ट हर चैप्टर का पहले कंक्लूजन पढ़ लो and then have a cursory reading of the entire chapter. Okay, don't stress out yourself too much on economic survey. In fact, अगर economic survey आपको टफ लग रहा है तो जब economic survey रिलीज होता है तो हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में 5-6 पेज economic survey के होते हैं. 5-6 pages are for economic survey exclusively. You can read that also. But don't stress out yourself too much on economic survey. Don't go on line chart, pie chart. इस फिगर को भी समझूंगा, इस वेरिएशन को भी समझूंगा. जस्ट हैव अ कर्सरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटायर बुक, अदरवाइज इट विल बिकम डिफिकल्ट. ओके, न्यूज़पेपर में भी आता है, न्यूज़पेपर में भी 5-6 पेजेस से आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी इकोनॉमिक सर्वे की. दैट्स इट फॉर इकोनॉमिक्स. फिर न्यूज़पेपर यू हैव टू रीड ओनली वन न्यूज़पेपर एंड दैट शुड बी द हिंदू. इंडियन एक्सप्रेस इज ऑल्सो गुड, इट मेक्स यू इंटेलिजेंट, बट अगर यूपीएससी एम करना है फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में, द हिंदू इज इनफ.
And apart from that, a cursory reading of Yojana. You see, don't spend too much of time reading 10 articles, 50 pages, and that too only one topic. Read the preface of every Yojana. That's the summary of what Yojana is, of what that topic is all about. Preface. Preface के बाद अंदर हर एक topic में there are summary boxes. There are small boxes. Just go through them. What it wants to say. Don't research reading all articles top to bottom. Just read boxes जो अंदर होंगे हर article के. Do you understand? And read preface. Important. Okay. So, after you do all these things, you have to do in the last 2 months or preferably 1.5 months only test series. Any two. One your coaching institute and one from the market. Anyone. Any two test series you have to do dedicatedly. When you read all these things, last 2 months should be reserved for test series only. And during the 4 or 5 months of preparation of prelims, you just have to have a cursory reality check through questions posed online या past year question papers. क्या मैं कर पा रहा हूं जो मैंने पढ़ा है, क्या मैं कर पा रहा हूं? During the preparation, तब 100 क्वेश्चन पूरे नहीं करने हैं 2 घंटे तक. That thing has to be exclusively meant for the last 2 months. कि डेडिकेशन से 2 घंटा वो पेपर कर रहे हैं घर पे बैठ के और फिर पूरा दिन उस चीज को रिवाइज कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव जो मॉडल आंसर की होता है उसको रिवाइज कर रहे हैं. That is for last 2 months. But during the entire journey, you just need to have time and again reality check of what you are reading, whether you are getting output also or not through past year papers 2013 onwards prelims के लिए. ठीक है? You see, and in test series you have to improve the power of intuition, elimination कैसे करें बाकी सब चीजों को. You need to have that with practice. जब आप 40-50 टेस्ट करेंगे तो अपने आप वो इवॉल्व होगा. You see, I believe that UPSC at no point is checking your knowledge. It is checking your personality traits. Intuition being one of them. Intuition is very underrated. Sometimes it is better than logic and rationality. Read what Albert Einstein says on intuition or Steve Jobs says on intuition. आपको लगना चाहिए ये तो आंसर हो ही नहीं सकता. UPSC ये पूछ ही नहीं सकता ऐसे ऑप्शन में. आपको लगना चाहिए कि यही आंसर हो सकता है. So you have to work upon that. Only, mandatory. कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हो जाती है ना, This is correct only. यार वो 90% गलत होगा, 10% सही भी हो सकता है. Mandatory. You see, you need to work upon these things. You need to get the knack. You see, 50 क्वेश्चन हर एक सही कर लेगा. Every genuine aspirant will attempt 50 questions which will be correct. Game है 30 क्वेश्चंस की. जो next 30-35 क्वेश्चंस होंगे. That's a game. And UPSC is checking your spontaneity to deal with randomness. So you see, improve your intuition power, improve your elimination practice to reach at a logical answer through constant practice. I told you about prelims. Wait. So NCERTs पे command होनी चाहिए. Syllabus मैंने बोला more or less. Concepts and application you need to make very clear of NCERTs. You don't need to go on facts, data much. You just have to clear out your concepts of polity, of economy, of environment, of geography, of history. History में political history मत करना. Social history, economic history, cultural history, religious history. Do you understand? Political history नहीं. फारूक सियार का बेटा कौन था, जहांगीर शाह का बेटा कौन था, शाहजहां के कितने बेटे थे. I see many people getting stressed out because of this. कि I forgot who was शाहजहां's बेटा. It is not important. They are not checking you. तभी मैंने कहा the first thing you'll have to do is syllabus and past year papers, क्योंकि the first thing you'll have to notice is UPSC की नब्ज पकड़नी है कि what it demands from you, and then you'll have to prepare for UPSC. Okay? You see, I can tell you the book list, strategy, sources. This has been the prelim strategy, more or less. But you see, you need to have that desire. You need to have that firm decision. You need to have that passion alive throughout this journey. You need to have micro and macro planning. You need to inculcate discipline. You need to have that consistency and persistence that you can never fail. Temporary failure can be there, but every temporary failure brings with it a seed of next substantial success. You will succeed if you persist. So, and find your purpose here. Is it to serve national interests? कि सिर्फ डीसी साहब सुनना है, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, social recognition चाहिए. If it is your purpose, then every third day you will be demotivated. The purpose has to be larger.
You see, our heart has a purpose to pump blood. Our limbs have a purpose to make us walk. The stars have a purpose to give us heat and light. The gravitational pull has a purpose to make things bind together. If all inferior things existing in the universe have a purpose, then man, you people, the highest evolution of humankind or existence, surely is supposed to have a larger purpose. So the first homework would be to find your purpose. If it is to become a great medical doctor, great. Great engineer, great. To crack civil services, nothing like that. But you need to find your purpose. As soon as you find it, download the syllabus. Take its printout, read it thoroughly. Have a 360-degree analysis of it, what it wants. Take out past year papers, 2013 onwards. See what are the nature of the questions being asked. General studies, very basic questions are asked in prelims. And then proceed with this condensed book list. You will win.